Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So, in this video, we are going to discuss the manufacturing policies. So, let me start the presentation. So, in general, uh, uh, two policies were discussed in the previous slides. I'll just show you these one. Okay. So, if there is a manufacturing setup, so they will either be using uh, production to order philosophy or production to stock philosophies. Production to order uh, is based on the customer order, and production to stock philosophy is a philosophy which is normally used by most of the industries, and they simply make the products, stock them as inventories, and then whenever an order is received from the market, so they simply deliver those products to the customers. These two general categorization is further subgrouped in those four strategies that I just showed you. So let me go back to that slide again. These are those four categorization of production to stock and production to order policies. So the first one is make to stock policy, MTS. ATO, assemble to order. MTO is make to order, and ETO is engineer to order. ये मैंने आपको बताया था कि जब हम जॉब शॉप प्रोडक्शन एंड व्हेन वी वर डिस्कसिंग जॉब शॉप बैच टाइप एंड mass type of production. So I mentioned these philosophies over there that in job shop they can either use make to order or engineer to order, etc. So today we are going to discuss a little bit detail about these policies. So let us start with make to stock philosophy. So make to stock is basically production to stock. The company produces things and then they stock them. So make to stock is simply production to stock philosophy. Manufacture of the product is based on well-known and predictable demand patterns. I told you that production to stock philosophy is normally adopted by those companies who are in मास प्रोडक्शन सेटअप्स और मास प्रोडक्शन में वही प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि नॉर्मली it is needed by the market, and the people know the company people knows that this particular product will be needed by the customers or by the market maybe for the next 2 years or 3 years or 4 years or 5 years. So without care for the present orders of the customer, they simply make the products and stock them. So it is production to stock or make to stock philosophy. So now if you look into the make to stock philosophy or production to stock philosophy, so for sure the demand will be there from the market side. So manufacture of the product is totally based on the predictable demand pattern. The second bullet shows about the production strategy, that what type of strategy can be associated with this particular policy. So it is mass type of production. So production of volume of each unit is very high. It can be adopted by batch setup. Batch type of production में भी जो है वो मेक टू स्टॉक की ही फिलॉसफी अडॉप्ट की जाती है, या प्रोडक्शन टू स्टॉक जिसे आप कहते हैं
because these types of products are also dependent on the previous trends of the market, that uh, previous trends were or the graphs were like that. So for the next span of time, which may be 1 year or 2 year or 3 year, maybe 10 years, that will depend on the type of the product. So batch type of production, as we discussed in the last video, that it is a little bit advanced form of mass production. Mass production में एक ही product बनता है which is needed by the market, while in batch type of production 2 or 3 different products is manufactured by an industry. So customer delivery time for MTS policy is very short. Because the finished goods are there, they are stored as inventories, and whenever an order is received, so simply the company delivers the product to the customer. So the only time for which the customer will wait to receive the product is the transportation time. So when the customer places an order, so simply the company will transport that product to the desired location. So transportation time जो है वो आपका customer delivery time बन जाता है in case of MTS philosophy, which is a big advantage over other philosophies. So advantage यही है कि short delivery time है. Product life cycles are always predictable. प्रिडिक्टेबल लाइफ साइकिल ही होती है प्रोडक्ट्स की. यू नो दैट वी विल मेकिंग द सेम प्रोडक्ट फॉर 10 years or 20 years or 5 years, whatever is that period. So normally product life cycles of the products that are manufactured under MTS philosophy, they have predictable market life, predictable and long market life. डिसएडवांटेजेस में आप यही कह सकते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है comparing to other philosophies, because when you keep a finished product as an inventory, so for sure it will need some maintenance also. So maintenance costs जो है उसके ऊपर आ जाती हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग etc. Customer interaction is distant. There is no such customer interaction in between the engineering department of the company and the customer. So customer का input जो है it is only at the survey level. जब initially product design किया जाता है तो the company take inputs from the market, and then they try to incorporate those needs of the customer within the product design. So it is only at the sales department. Next philosophy is ATO policy. ATO is assemble to order. So again नाम पे अगर आप सोच ले तो एक है प्रोडक्शन टू ऑर्डर. सो असेंबल टू ऑर्डर इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PTO फिलासफी, जो जनरल टू टाइप्स हैं, प्रोडक्शन टू स्टॉक और प्रोडक्शन टू ऑर्डर. ठीक है ना. सो MTS जो है वो PTS के अंदर आती है, और ATO जो है इट इज़ PTO philosophy basically. So production to order में whenever an order is received by the customer, so the company will make the product. And similar case is here in ATO, assemble to order. So assemble to order में the sub assemblies will be made in advance for the products, and whenever an order is received by the customer, so afterwards the company then assemble the whole product, because it is easier to maintain the sub assemblies comparing to a full fledged product. MTS में पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो एज एन इन्वेंट्री स्टोर में रहता है. सो इट नीड्स मोर केयर एंड टाइम. उसकी मेंटेनेंस जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू assemble to order philosophy. So sub assemblies are smaller in sizes, smaller in constructions. They are easy to make. They are easy to stock basically. So
what the companies do in ATO philosophy or policy is that the sub assemblies of the product are made and then they are stocked. After the receipt of the order, they are simply assembled and then delivered to the market. You know. So delivery time in this case is medium. So हम जो है वो delivery customer delivery time जो है उसकी categorization normally low, medium और high के reference से करते हैं. So in case of MTS, the customer delivery time is short. For ATO philosophy, it is medium comparing to some other strategy. And here the delivery time is based on the availability of the major sub-assemblies. So if the sub-assemblies are there, so the customer delivery time will be the transportation time plus the assembly time. Assembly will only take place on the receipt of the customer order. So this shall be kept in mind. Again, here as far as the customer inputs are concerned, so they are only at the sales department. जो initial service perform की जाती है वहाँ से ही customer input मिलता है डायरेक्टली कस्टमर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है इस फिलॉसफी में. So this is ATO philosophy. MTO is make to order. So make to order is again PTO philosophy, production to order. So assemble to order में बैच प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली ये फिलॉसफी अडॉप्ट की जा सकती है इन विच सब assemblies will be there and they will be assembled after the receipt of the order. Make to order philosophy में the product will only be manufactured whenever the customer will place the order. So manufacture of the product begins basically upon the receipt of the customer's order. Many of the base components will be available along with engineering designs. So normally MTO philosophy जो है वो भी batch production के साथ आप associate कर सकते हैं. So the designs are there. जो standard components हैं it will be there. And some new components may be added, may be designed according to the customer order. So जो special orders होती हैं normal वो भी MTO के philosophies में आ जाती हैं और जो customer की तरफ से order आएगा तो product की जो manufacturing है that will totally dependent on that particular order. The product is not actually completely specified. Configuration of the product may change from the initial specifications during the processing period. So ये वो सिनारियो है जो मैं आपको बता रहा था कि जो customized equipments normally आप use करते हैं तो the base components are there. But if you need some changes or if the customer wants some changes within that existing product, so configuration may differ from the standard components, and for that definitely the company will be then designing and making some of the new products and afterwards they will be assembled. So customer interaction in case of MTO philosophy is extensive as compared to the other two philosophies. It involves the sales to hoga initially, and engineering department is also involved. So the customer will come, he will interact with the engineering department, he will explain his demand, क्या specs होने चाहिए, क्या dimensions होने चाहिए. So accordingly the engineering department will design the component and then it will be manufactured. So delivery time जो है इस case में customer delivery time that may range from medium to large, and it will totally depend on the capacity of the system कि आपकी system की कितनी capacity है to absorb those changes. So how well you can design things and how
efficiently and fastly, you can make those new components within a full-fledged product. So MTO philosophy में customer will come with a design, and then the company will make a design for the customer and then manufacture the product. But one point here should be noted that uh, the customer comes with some initial design parameters which will not be fully defined, and the full design normally is then uh, the task of the engineering department to design the product according to the specification of the customers. So there may be two scenarios, like if the customer come up with a raw data and tell the people that I want this type of product which will perform certain tasks like this task, this task, this task. So accordingly, and if he asks the company to design a product which will perform these activities for me, so the company will make the design. They will start basically from the initial design. They will establish the design parameters and then will manufacture the final product. Other scenario could be like that if the customer comes with the exact completely specified design. अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है वो किसी दूसरी कंपनी की तरफ गया है, सो देर आर सो मेनी कस्टमर्स नाउ अवेलेबल विद इन द मार्केट विच ओनली डिज़ाइन थिंग्स फॉर द पीपल, ठीक है ना. सो अगर एक कस्टमर है और वो एक दूसरी कंपनी की तरफ गया है और वहाँ पे उसने डिज़ाइन बना दिया है, एंड देन he comes up with that specific design to the company, to the manufacturing system, and place an order कि मुझे exactly यही product चाहिए. So in that case, the design comes from the customer side. So जो customer interaction है, that will be even more extensive comparing to the MTO philosophy. और उस सिनारियो को या उस पॉलिसी को जो कंपनी अडॉप्ट करती है उसको हम कहते हैं ETO, engineer to order. So engineer to order and make to order are same philosophies in which the customer will come with the product specifications, and accordingly you will make things according to the customer desires. So if those specifications are incomplete, and if you are required to make the design according to the customer order and then manufacture the product, so that philosophy is MTO. और अगर पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो कस्टमर की तरफ से ही आ रहा है, and if you are only required to make the product according to the design specification of the customer, so that philosophy is ETO, engineer to order philosophy. So ETO is basically extensions of the MTO, and the engineering design of the product is totally based on the customer requirements and specifications. So customer interaction in this case is even more extensive than MTO. As far as the company is concerned, so for the company, MTO is easier than ETO, because जब customer आएगा and when he places an order, so you will design the thing, and you will know the capability of your system. So within those capabilities, you will try to make the design. But if the customer come with the exact product specifications, so then you will have to reconfigure your system according to the. तो हो सकता है कि कोई कैपेबिलिटी जो है वो आपके सिस्टम में ना हो. सो इवेंचुअली अगर आप ETO फिलॉसफी के तहत जो है वो काम कर रहे हैं, सो यू विल बी देन रिकॉन्फ़िगरिंग योर सिस्टम. आपने नया इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल करना होगा.
सो ये पॉलिसीज़ जो है ये बेसिकली वही जॉब शॉप प्रोडक्शन की तरफ चली जाती है। जॉब शॉप में ही आपके पास कस्टमाइज या स्पेशल ऑर्डर्स जो है वो कस्टमर की तरफ से आते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर फोर फिलोसफीज दैट आर नॉर्मली adopted by the industries, ठीक है ना। सो यू हैव टू नो these philosophies. MTS है, ATO, MTO and ETO, engineer to order. This is a table which shows the comparison of the philosophies that are discussed. So इसमें aspects जो है वो given है, and accordingly MTS या ATO या MTO philosophy जब आप adopt करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो MTO ही सिर्फ मैंने टेबल में मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज़ बिकॉज इंजीनियर टू ऑर्डर एंड मेक टू ऑर्डर इज़ little bit similar to one another. The only difference that I told you that if the engineering specifications are completely defined by the customer, so that will be engineer to order. Otherwise बाकी जो सिनारियो है वो सेम ही रहेगा. तो एस्पेक्ट्स में अगर आप देखें तो वन इज़ द कस्टमर मैन्युफैक्चरर इंटरेक्शन, है ना. सो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर का जो इंटरेक्शन है इन एम टी एस फिलासफी इट इज़ वेरी लो डिस्टेंस. ये जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के हद तक ही होता है. एंड सिमिलरली फॉर ए टी ओ फिलासफी. और एम टी ओ या ई टी ओ में अगर आप देखते हैं तो कस्टमर मैन्युफैक्चरर इंटरेक्शन इज़ एट द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. इंजीनियरिंग और सेल्स लेवल पे चला जाता है. कस्टमर डिलीवरी टाइम अगर आप देखें तो इन केस ऑफ एम टी एस इट इज़ शॉर्ट, असेंबल टू ऑर्डर में मीडियम है, और मेक टू ऑर्डर में लॉन्ग ही होगा, चाहे वो ई टी ओ हो या एम टी ओ हो. प्रोडक्शन वॉल्यूम या प्रोडक्ट वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो एम टी एस फिलासफी इज़ मास प्रोडक्शन सेटअप. तो प्रोडक्शन वॉल्यूम हाई ही होती है. असेंबल टू ऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि जो बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो बैच प्रोडक्शन में आपकी मीडियम प्रोडक्शन ही होती है. और एम टी ओ या इंजीनियर टू ऑर्डर को अगर आप देखें तो वो जॉब शॉप प्रोडक्शन की फ़िलासफ़ी है. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन या वॉल्यूम जो है वो लो ही होता है. तो इट इज़ विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन फ़िलासफ़ीज़ बेसिकली. प्रोडक्ट रेंज अगर आप देखें, प्रोडक्ट वेराइटीज़ जो हमने डिस्कस किया था, तो एम टी एस में और ए टी ओ में अगर आप देखें तो वो लोअर से मीडियम रेंज में ही रहेगी. तो एम टी एस इज़ बेसिकली मास प्रोडक्शन इन विच ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस. सो प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्ट वेराइटी इज़ एट द लोअर लेवल. Assemble to order is a policy which is adopted by batch type of production. So batch type of production में आपका product range जो है या product variety जो है वो एक से बढ़ के दो या तीन हो जाती है. So it is medium. हाई भी आप कह सकते हैं अगर कस्टमाइज ऑर्डर भी कोई कंपनी एक्सेप्ट करती है. बट अदरवाइज ए टी ओ फिलासफी में जो प्रोडक्ट रेंज होती है वो मीडियम में ही रहती है, ठीक है ना. और एम टी ओ और ई टी ओ में हाई ही होगी, बिकॉज ईच न्यू ऑर्डर ऑफ द कस्टमर विल बी totally different from the previous one. Basis of production, वो किस चीज़ पे बेसिस है, तो मैं एम टी ओ से स्टार्ट कर लेता हूँ. बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अगर आप ई टी ओ या एम टी ओ देखें सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर ऑर्डर. सो बैकलॉग मीन्स द कस्टमर ऑर्डर. सो कस्टमर ऑर्डर पे ही डिपेंडेंट है. एम टी एस को अगर आप देखें तो फोरकास्टिंग टेक्निक यूज़ की जाती है. फोरकास्टिंग जो है वो आपने पढ़ी होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में या प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट है उसकी कोर्स में. तो फोरकास्टिंग इज़ बेसिकली
prediction, ठीक है ना. So the company predicts that for the next 2 years or 5 years or 10 years or maybe 20 years, this product will stay in the market, and based on that prediction, they make the production. प्रीवियस ट्रेंड्स भी देखा जाता है. फॉरकास्टिंग नॉर्मली यही होती है कि प्रिडिक्शन की जाती है, और प्रिडिक्शन जो है नॉर्मली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट के प्रीवियसली इसकी इसका ग्राफ जो है सेल्स का वो कैसे जा रहा है, और मार्केट में इसकी क्या अफादियत है. सो अकॉर्डिंगली they plan things for the future as well. And the similar philosophy is adopted by ATO, जो जॉब जो बैच टाइप ऑफ प्रोडक्शन होती है, that is also most of the products are dependent on the forecasting technique. प्रिडिक्शन की जाती है कि फ्यूचर नेक्स्ट इतने ईयर्स के लिए जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में इन रहेगा. एंड समटाइम्स if some special order or special type of batch is ordered by the customer, and if the company has the capability, so they can use the backlog philosophy, like the customer order philosophy. MTO, as discussed, it is totally dependent on the customer order. और जो कस्टमर डिलीवरी टाइम की हम बात करते हैं कि ये शॉर्ट है, मीडियम है, रेंज है, सो वो बेसिकली किसके ऊपर बेस करती है. सो एम टी एस जो है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड इन्वेंट्रीज के. अगर प्रोडक्ट है आपके पास इन्वेंट्री में, तो यू विल डिलीवर दैट प्रोडक्ट. In case of ATO, the delivery time of the product to the market, yeah, to the customer, it will be dependent on the availability of the major sub-assemblies. So if the sub-assemblies are there and the company receives an order, so simply they will assemble things and then will deliver the final product to the customer. MTO में या इंजीनियर टू ऑर्डर में अगर आप देखते हैं, तो जो डिलीवरी टाइम होगा, that will be totally based on the capacity and the capability of the manufacturing system. कि कितनी capability है आपके system में, that how efficiently you will design the product and then manufacture it. डिलीवरी टाइम को अगर आप देखें, सो जो बेसिस मैंने आपको बता दिया है कि इसकी ऊपर अवेलेबिलिटी के ऊपर, या अवेलेबिलिटी ऑफ द सब असम्बलीज़ के ऊपर, या कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, तो थोड़ा सा और एक सेकंड टेबल में जो है मैंने बताने की कोशिश की है. The type of manufacturing strategy that is adopted by the company, and the lead time. So जो customer delivery time है, that is basically technically it is known as customer lead time. And customer lead time is the, yeah, simply lead time is the time in between the customer order and delivery of the product to the customer. So इंजीनियर टू ऑर्डर फिलॉसफी अगर आप देखें, तो उसमें जो लीड टाइम की डिलीवरी है, या कस्टमर डिलीवरी टाइम आप कह लें, तो इसमें शिपमेंट भी आ जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन टाइम आ जाता है. यानी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन, ठीक है ना. सो you will make the design, then you have to purchase the equipments and the raw materials, और उसके बाद आपकी manufacturing start होगी. Then you will assemble the final product, and afterwards you will deliver the product to the customer. So this is engineer to order philosophy. Make to order में, as I told you, that most of the standard components will be there. So normally delivery time जो है, it start with the from the manufacturing phase, ठीक है ना. So inventory is there, and manufacturing start हो जाती है, उसके बाद फिर assembly and then shipment. Assemble to order में sub assemblies are there, so they start with the assembly operation. So
सब assemblies are assembled and then they will be shipped to the customers. And make to stock को अगर आप देखें तो it is only the shipment time. So जो customer delivery time है या जो lead time है, that is only the transportation time of the product from the company to the market. So ये मैं आपको बता दूं, जो स्लाइड नंबर 126 से ऑनवर्ड, ये जो है ये आपके लिए रेफरेंस के स्लाइड्स हैं. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स, जस्ट गो थ्रू देम. ये ऑलरेडी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में जो है वो कवर की हुई हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो है उसके रेफरेंस है कि क्या चीज़ें हैं. मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये फिगर जो है वो आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो दो मेजर कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं, असेंबली ऑपरेशंस हैं. फिर प्रोसेसिंग में शेपिंग हो सकता है, प्रॉपर्टी इन्हेंसिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं, सरफेस प्रोसेसिंग और उनकी डिटेल्स हैं. सो अब हम जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम चूँकि प्रोसेस पैरामीटर्स पढ़ेंगे. सीएनसी प्रोग्राम्स की तरफ जब आप जाएंगे तो उसमें ऑपरेशंस डिटेल्स आप पढ़ेंगे. तो यू मस्ट बी एबल टू know the entities that are associated with the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ठीक है ना. सो यानी फॉर एग्जांपल टर्निंग है तो टर्निंग क्या चीज़ होती है, मिलिंग ऑपरेशन क्या है या मिलिंग प्रोसेस क्या है, फीड रेट्स क्या हैं, डेप्थ ऑफ कट्स क्या है. ठीक है ना. सो जस्ट गो थ्रू दैट. ठीक है ना. और ये उनकी थोड़ी बहुत डिटेल है. तो दी स्लाइड्स आर नॉट इन द कोर्स, ये सिर्फ रेफरेंस स्लाइड्स हैं. ठीक है ना. सो ये आप पढ़ लें स्लाइड नंबर 132 तक. ठीक है ना. सो फ्रॉम स्लाइड नंबर 126 to 132 they are reference slides. और so this slide we will discuss in the next video. So I will make short videos so that you will not get bored.